जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। अभी हम सब जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी दोनों हाथ हम श्री माता के सामने बैठ। We will all come together and sit down in front of Shri Mataji with both our palms towards Shri Mataji. अभी श्री माताजी की बिंदी देखते रहेंगे. We'll continue to appreciate श्री माताजी's बिंदी. श्री माताजी के फोटो निहारते हुए हम दोनों हाथ पे वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे. We'll try to observe the vibrations in both our palms. श्री माताजी's बिंदी, अपना ब्रह्मरंध्र, अपना सेंटर हार्ट और अपने दोनों हाथ महसूस करते रहेंगे. We'll observe Shri Mataji's photograph, our Brahmarandra, our center heart, our two palms. We'll observe the vibrations. जैसे बैठने के बाद ये vibrations कैसे बढ़ते रहते हैं महसूस करते रहेंगे. We'll observe how the vibrations slowly increase as we settle down inside. हम माँ को पूरी तरह अपने अंदर आने देंगे. We will let mother completely settle in our heart. और आने देंगे और आने देंगे. We will let mother settle in more and more. अभी ये पूरे वाइब्रेशंस लिए हुए हम
नतमस्तक होके श्रीमाता जी को वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे. With these vibrations in our hand, we'll bow down to Shrimata ji, then collectively raise our kundalini and take bandhan. Slowly, aista aista. जय श्री माता जी. अभी कुंडली उठा के बंधन लेने के बाद फिर से महसूस करेंगे दोनों हाथों में समान तरीके से वाइब्रेशंस आ रही कि नहीं. और माँ जो फोटो में है वो फोटो में से अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने हृदय में आहिस्ता 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 अंदर आ रही कि नहीं. With both our palms nicely towards Shri Mataji, we'll observe if Shri Mataji from the photo, she's coming in from our Brahmarandra along the Sushumna Nadi into our heart, the center heart, so that she makes her Singhasan there, ताकि वो अपने सिंहासन हमारे हृदय में बिठा ले. आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह अपना चित्त अंदर जा रहा है कि नहीं देखते रहेंगे. We will observe how Shri Mataji absorbs our attention. जितना माँ अंदर जा रही है उतना अच्छा सहस्रार भी बनते जा रहा है. As the vibrations get in from the Brahmarandra, the Sahasrara gets widened more and more. Let our Sushumna become more wider to absorb Shri Mataji more. अपना सुषुम्ना को और चौड़ा होना देंगे ताकि माँ की वाइब्रेशन से और अंदर आए, माँ पूरी तरह अंदर आए.
आंखें बिल्कुल बंद, आइज रिमेन क्लोज्ड। अभी अपना राइट हैंड धरती माँ पे, विल पुट और राइट हैंड ऑन मदर अर्थ, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी असंतुलन है उसे धरती में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, वॉट एवर इम्बैलेंसेस वी हैव इन आवर ईड़ा नाड़ी, प्लीज रिमूव एंड गिव देम टू मदर अर्थ। अभी अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे, राइट हैंड से कुछ धरती में जा रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड से कुछ अंदर आ रहा है कि नहीं। From top of our head, we'll observe if something is going down from our right hand into Mother Earth and if something is coming in from our left hand. अभी महसूस करेंगे लेफ्ट हैंड की ये 5 उंगली से वाइब्रेशंस आते हुए मूलाधार, हाथ में मूलाधार से अंदर जा रहे कि नहीं। विल ऑब्जर्व द 5 tributaries of the fingers are coming in through the मूलाधार in the palm inside. महसूस करते रहेंगे कौन से उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही है। We'll observe which of the fingers of the left palm are we absorbing cool air. ये 5 उंगली जैसे 5 छोटे छोटे नदियां हो, वो पूरा मिलके गणेश जी की जगह जहां मूलाधार है वहां से अंदर जा रही कि नहीं। महसूस करते रहेंगे। We'll observe as if the 5 tributaries assimilate together near the Muladhar area of the palm and get inside. और आने देंगे। We'll let it come more.
जय श्री माता जी। अभी राइट हैंड श्री माता जी को और लेफ्ट हैंड धरती माँ पे। विल पुट our right hand towards श्री माता जी, लेफ्ट हैंड on मदर अर्थ। एंड अगेन विल प्रे, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे राइट मूलाधार को स्वच्छ कर दीजिए। श्री माता जी प्लीज क्लेंस आवर राइट मूलाधार। अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है। फ्रॉम टॉप ऑफ आवर हेड वी विल ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग इन आवर राइट palm and what's happening in our left palm. अभी फिर से अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड की कौन सी उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही है। From top of our head, we'll continue to observe which of the fingers of the right palm are we absorbing cool air. अभी अपना लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। We'll put our left hand towards Shrimad, towards the sky. Right hand remains towards Shrimata ji. Right hand Shrimata ji को और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। और हम प्रार्थना करेंगे श्री माता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी असंतुलन है उसे आकाश में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी प्लीज रिमूव ऑल our future thoughts, imbalances, and heat from our Pingla Nadi and give it to ether, the sky element. फिर महसूस करते रहेंगे राइट हैंड की कौन सी उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही है और वह जैसे और 5 नदियां मिलके फिर से मूलाधार, राइट मूलाधार हाथ में वहां से अंदर जा रही कि नहीं। We'll observe like the 5 tributaries in the fingers if they are assimilating in the Muladhara area and getting inside in the palm. And if our left hand is ventilating.
or anything. We will let the right hand absorb more and more. अभी दोनों हाथ अपने गोद में. We'll bring both our palms nicely on our lap. श्री माता जी कृपा करके हमें वर्तमान में ले आइए. कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए माँ. श्री माता जी प्लीज ब्लेस अस विद बैलेंस. प्लीज ब्लेस अस विद द गिफ्ट ऑफ प्रेजेंट. अभी अपना राइट हैंड को सर के 2 इंच ऊपर. यू विल टेक योर राइट हैंड, पुट इट 2 inches above the head. And we'll observe if you're getting vibrations on top of our head and if the Brahmarandra is opening. राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर रखेंगे और वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं महसूस करेंगे, और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं महसूस करेंगे. we अपना राइट हैंड नीचे ले आएंगे. लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर. विल टेक योर लेफ्ट हैंड 2 inches above the head. Right hand towards Shrimati. Again we'll observe if vibrations are coming and if the Brahmarandra is opening. we फिर से देखेंगे यहाँ वाइब्रेशंस आ रही कि नहीं और ब्रह्मरंध्र अच्छी तरह खुल रहा है कि नहीं. अभी लेफ्ट हैंड नीचे. we'll bring our left hand down. Take our right hand again on top of our head. लेफ्ट हैंड नीचे ले आएंगे. राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता हाथ को ऊपर लेते जाएंगे. Slowly we'll take our right hand up till how far we can take it and feel vibrations. राइट हैंड को ऐसा ऐसा ऊपर लेते जाएंगे जहां तक हमको वाइब्रेशंस महसूस हो, वहां तक ले जाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता स्लोली. चित्त को उधर छोड़ के राइट हैंड को नीचे लाएंगे. We will leave our attention there on the top of the head and slowly bring your right hand down. Now we'll take our left hand, put it 2 inches above the head, and again lift our left hand as high as we can till where we feel the vibrations. आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट हैंड को भी ऊपर लेते जाएंगे जहां तक हमको ये वाइब्रेशंस के महसूस हो रहे हैं. और चित्त को ऊपर छोड़ के हाथ को नीचे ले आएंगे. We will leave our attention there on top of the head and bring our left hand down as well. अभी चित्त उधर ही रखेंगे. सुषुम्ना नाड़ी, मूलाधार, सहस्रार and where we left our attention. सुषुम्ना नाड़ी को महसूस करते रहेंगे. मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से जहां तक हमने चित्त वहां छोड़ा.
थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना नाड़ी का आनंद लेते रहेंगे. For some time we'll enjoy this सुषुम्ना नाड़ी. Sushumna Nadi is Parasahanubhuti Nadi, meaning this is the Nadi that is connecting to the heavens. सुषुम्ना नाड़ी को पर सहानुभूति नाड़ी बोलते हैं. इसका मतलब यही नाड़ी है जो माँ ने हमारे लिए द्वार बनाया, स्वर्ग का द्वार. अभी कभी कभी अपने दोनों हाथों को भी महसूस करते रहेंगे. We'll observe the Sushumna Nadi more, but occasionally we'll also observe the both palms. जो भी हो रहा है होने देंगे. We'll let the Kundalini do its magic. अभी यही स्थिति में माँ का स्पीच आनंद लेंगे. We'll enjoy mother's speech on being a global personality. You have to promise me that you will meditate every night, every evening, maybe in the morning also. Whenever it is possible, if you can go into meditative mood, you are in contact with this divine power. Then whatever is good for you, whatever good for your society, for your country, all is done by this divine power. You don't have to overpower the divine power. You don't have to order, you don't have to ask. Just if you meditate, you are one with this all-pervading power, which is another great blessings to us. Unless and until your Sahasrara is open, all the blessings of the divine power cannot come to you. Cannot. Maybe you might get some money, you might get some jobs, you might get this and that. But your own development is only possible when you meditate and your Sahasrara is completely open and open to truth. Now the truth is that this divine power is compassion, is love. This is the truth. They say God is love, God is truth. So the equation has to be made that truth is love and love is truth. But it's not a truth that as you have for your own children, you have for your family.
Attached love is not truth. If you are attached to somebody, then you never see the bad points of that person. If you are angry with somebody, then you can never see the good points of that person. But it's a complete detached love. And that love is extremely powerful. Because whenever you project that love to anyone, you will be surprised. The problems of that person will be solved, his personality will improve, everything will work out in a very big way, and his life will be changed. But if you are attached to anything whatsoever, that attachment itself causes problems and doesn't allow Sahaj to grow. This attachment could be any kind. For example, you can be attached to your country, attached to your society, attached to your family. It can be of any kind. But when Sahasrara is open, you learn one thing is detachment. It just happens that you get detached. Though, you are not running away. As it is in Sahaja Yoga, we don't believe in people who run away from society and go to Himalayas, or that I call up as escapism. That is not the point. What happens is that you are there. You see everyone, you watch everyone, you know everyone, you are close to everyone, but you are a detached person. It's a state of mind that you achieve when Sahasrara is open. Then that state you are dealing with people, you are dealing with problems, you are dealing with situations, but you are not involved in it. There's no involvement. And that involvement which you had before can never give a complete insight what is happening, what is the truth is about any situation. So this detachment helps. The greatest thing of the detachment is that you are not affected. No use saying that, oh, you are not affected, mother, so how can you feel for another person? How can you have compassion for another person? Because if you feel for another person, then only you can solve the problem. But this feeling that you have is again a kind of an attachment. It is not a real feeling, because it doesn't help. The person is crying, you are also crying. The person is troubled, you are also in trouble. And this does not help that person, nor will it help you. So to have detached in no way means you do not feel the another person. You do feel. You feel the agony of that person, the trouble of that person, of the whole society sometimes, and of the whole country. But that your feeling is so detached that the all-pervading power takes over. First we must have full faith in the capability of this all-pervading power. As soon as you are detached, you say, you do it. Finished. Once you say that you are going to do it, it's you who is going to do it, whole thing changes completely, because you transfer all your responsibilities, all your problems to this divine power, which is so powerful, which is so capable, which can work out anything. So whenever you think that this problem you are going to solve, you are the one who is going to do it, then all right, the divine power says, all right, try your luck. But if you can really put this problem to the divine power, it will work out. We have all kinds of problems in Sahaja Yoga, especially when we find that people are not so much attracted to Sahaja Yoga. They are few in number, then you feel very bad about it. But have you tried to meditate on this point, and have you tried to put this problem to the divine power? Why should we worry when we have divine power available through our Sahasrara?
Why should we worry? Why should we think about it? Just leave it to the divine power. If that is possible, if that you can achieve, you see, which is very difficult for human beings, because they live with their ego, they live their conditionings. But if that attachment to all these things goes away, then what you do is just leave things to this power. Krishna has said in his Gita, Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vacha. Forget about all your dharmas. Dharmas means meaning that we have a dharma of a wife, of a husband, of a member of the society. All of them have their own dharma. But he says, leave them and leave it them to me and I'll manage. This is it we have to learn, is to say that it's this divine power which will solve our problems. As human beings, it's a very difficult state. And this state only can be achieved through meditation. But I'm not saying that you go on meditating for hours together, not necessary. But with full faith in yourself and in the divine power. If you work it out, I'm sure it's not difficult to rise to that state of consciousness. That is what we have to achieve. It's possible for men as well as for women. They don't have to think, how can we, mother, do it after all? See, all such people are no good for surgery. Those who have diffidence about themselves cannot do anything. But those who are surrendered and those who think they can do it can manage all this transfer of their power to the divine power. Just put it on the divine power. Now supposing I have a car which can drive me down. So if I have a car, then I don't put bullocks on it, that I don't push my car. I just sit inside and use it. In the same way, if you have this great power around you, if your sahasrara is absolutely, completely submerged in it, then you will be amazed how things work out for yourself. I will give you an example of Sajogi. He is no more now. He was a fisherman, ordinary fisherman, but also he was educated, so he was working in a bank. This one was going one day to do some Sajoga work, and he had to go by boat. So when he came out, he saw the whole place was clouded and it was about to burst out into a big havoc. So he got very much perturbed about it, that what is this? Immediately his sahasrara was so open and good. Immediately he said, now I leave it to this divine power to stop all these things happening. I don't want it to rain and to have any problem till I come back home and go off to sleep. And it was surprising. People told me that, Mother, the clouds and everything were there all throughout, but it did not rain, did not do anything, and there was no chaos of any kind. He went to another island where he had to go, he did Sajoga and came back. And then when he went to sleep, then only everything started pouring down. So nature, everything, every leaf, every flower, everything is worked out through the divine power. So we should not have our ego that we can do something ourselves, we can manage ourselves. Once you have that kind of a thing, you are not yet that much developed, you are not that much grown up in Sajoga. But to grow up in Sajoga should not be difficult for you, because you have guidelines. Those people who got their realization, very few of them, like Sufis, and we had some saints in India, all of them, how much they must have struggled. Nobody to guide them, nobody to help them, nobody to tell them about what they can achieve. And despite that, they were very satisfied people, very happy people, and they worked it out so well. They saw the whole world with another angle, as you can also see,
But they were not upset, and they had such self-confidence. They had such knowledge of their own that they achieved through their meditative process. And the way they have written books, some of them are so great. It's very surprisingly how they have achieved these great verses, such full of knowledge. One cannot understand that they had no guidance. Nobody was to tell them. But one thing with them was that they always tried to look after their sastra. Now one thing is there upstairs. Thoughts are coming all the time. Because a human being is born who reacts to everything. React to this and react to that, and the thoughts come in and thoughts go. There's a big crowd of thoughts. Because of that, your attention cannot cross over Agya and can reside in the Sastra. So first of all, one should see what sort of thoughts are coming. You have to condemn yourself sometimes. You have to say, what nonsense, what have I been doing? What's the matter with me? How could I do all that? Once you start doing that, these thoughts will start disappearing. These thoughts are coming from two angles, one from the ego and another from your conditionings. And these are so much built up within you that they don't allow your Agya to be crossed. That's why we have two bija mantras of Ham Ksham. First one is, when it is conditioning, you are endowed with this kind of a fear. I shouldn't do like this, I shouldn't do like that, is not allowed, that is not allowed. That's the conditioning part of it. Conditioning can be of many types. But the ego part of it is that I must overpower everybody, I must get this, I must be able to rule everyone. These two things are there in the mind which are all the time crossing them. So it's important that we should go into thoughtless awareness. And that thoughtless awareness is the real way that your Sahasrara can be nourished by the Kundalini. Because Kundalini cannot go through, cannot pass through. And for that, as I said, there are two bija mantras. One is Ham, another Ksham. So if you are conditioned, you are frightened, you are afraid, and you had ideas about yourself. These days, the way people are describing, they'll say, I'm an extrovert. Somebody will say, I'm an introvert. Somebody will say, I'm hippie, I'm that. All kinds of things they can have attributed to themselves. But these ideas are all coming from outside. They are not from inside. To get to the inner side of yourself, to the subtler side of your being, you must allow the Kundalini to go through the Agya. To cross the Agya is a very important thing in modern times. And for that you have to meditate. If you can meditate with complete faith in yourself, this Agya can be opened up. With surrendering to the Divine. You have to surrender yourself to the Divine. And when this Agya opens, you'll be amazed. Your Sahasrara is just waiting to transfer, to give you all the help that you need through the all-pervading power. Your connection of Sahasrara with the all-pervading power is established. And by that you will be amazed how all these 7 chakras work for you. How they help you. How they try to give you whatever is the real knowledge about everything. This real knowledge that you get is very joy-giving. You can see this real knowledge in everything. You don't have to start reading any book about it. In every situation and in every person, in every flower, in every natural
happening, you see clearly the hand of the divine. Once you see the hand of the divine, your ego starts disappearing. Once you say that it's you do everything. Kabira has said something great about this. He said that when the goat is alive, it goes on saying, I am, I am. But when it is slaughtered and its intestines are made into strings which are used for cleaning the cotton, then it said, tu hi, you are. See, in this symbolic way, they have suggested that you have to become dissolved into this divine power. It's the divine power that does everything. What am I? I was just a drop, and I fell into this ocean of awareness of the divine power. And that is taking over and working it out. That will help you a lot to be a great surgeon. You develop curing powers, but still you are not proud of it. You developed, of course, awakening powers, you are not proud of it. You develop so many creative powers and you are not proud of it. You become really very, very creative, extremely creative. But the greatest thing happened to you that you become a global personality. So you start seeing the problem of every country, of every other nation where they have problems. But these problems when you see, you don't see like other people, because others may like to use it for their own purpose, maybe for media, maybe for something. What you want to see is that these problems are solved. See, your powers are so great with this kind of a mind, I would say, which is dominated completely by the divine power, that whatever disturbs you immediately is taken over and it starts working out. Many problems have been solved by surgery. And also they can be solved on a very universal level. If you are a global person, then what happens is that you become a sort of a vehicle, or you can become like a channel for this divine power to act, because you are purely a global personality. Not attached to this, attached to that, but a pure Sahaja personality, which can be used by this divine power very easily. आप लोगों के बुलाने का फल है। ऐसे भी देखिए कि मंदिरों में और मस्जिदों में और जहाँ जहाँ भक्त लोग माँ को पुकारते हैं तो माँ का हृदय उछलने लग जाता है। आपने देखा है कि जब कभी आप कुछ गाना जरा सा भी गाते हैं, मेरे सारे बदन से अनगिनत वाइब्रेशंस बहने लग जाते हैं। अगर कहीं पर भी मैं ऐसा अगर गाना भी सुन लूं या रिकॉर्ड सुन लूं या सिनेमा में ऐसा दिखाई दे जहाँ माँ को पुकारा जा रहा है, मेरे सारे बदन से करोड़ों रश्मियां जैसे वाइब्रेशन निकलने लगता है। यह आपने भी जाना हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। इस चीज को आप भी समझते हैं कि ऐसा माँ को होता है। आज वो समय आ गया है कि जब आप ही का मांगना, आप ही की चाहत, आप ही लोगों की पुकार साकार मेरे अंदर हो जाए। मैं स्वयं से नहीं आई हूं, मैं आप ही के पुकार से आई हूं। आपके अनादिकाल से जो पुकार और चिल्लाहट हो रही थी, उसी के कारण मैंने शरीर की धारणा। और आप भी, आप ही लोग सर्वसाधारण जन हैं, मुझे पहले पहचानेंगे, और ये जो बड़े बड़े साधु संत और बाबा जी बन के बैठे हैं, ये पहचानेंगे नहीं। जैसे इन्होंने न सीता को पहचाना था, न राधा को पहचाना था, न मेरी को पहचाना, और अब भी ये लोग नहीं पहचान सकते। जो इंसान अपनी माँ को भी नहीं पहचानता है, उसको बाप क्यों पहचाने? सहयोग को खिलवाड़ नहीं समझना चाहिए, सहयोग को एक साधारण चीज नहीं समझनी चाहिए। ये बड़ी अनुपम, अजीब व गरीब चीज आई है। आपको कभी किसी किताब में ऐसा लिखा मिला गया क्या कि ये आपका चक्र अगर पकड़ जाता है तो ये विशुद्धि चक्र है? The first, we bow to
Sri Ganesha. Because Sri Ganesha is the source of innocence within us. So actually we bow to innocence within us. And this innocence is the one gives you the enlightenment. As I told you yesterday, the light has innocence. But this is innocent without knowledge. But your light is innocent with knowledge. We always think that the people who have got knowledge can never be innocent, can never be simple. And the idea we have got about innocence is that an innocent person is always deceived, can be befooled, and can be always taken for granted. But innocence is a power. It is a power which protects you, which gives you light of knowledge. Knowledge that we have in the worldly sense is how to exploit others, how to cheat others, how to make money out of them, how to make fun of others, how to look down upon others. But the light of innocence is the light by which you know that love is the highest thing. And it teaches you how to love others, how to care for others, how to be gentle about others. It also gives you the light within. It's just the other way around of this avidya that we have in this world. Just the other way around. The avidya outside teaches us competition, how to put the other person down, because it has fear. It is insecure. This knowledge is not secured at all. If it had security, it would not have behaved like this. But the light of innocence knows everything. It has no fear. When we say children are innocent, we mean to say that they have that power of innocence. Many times people have noticed if a child falls from a height, he doesn't die. While a young man may die with a much smaller height. And the child is not afraid while falling. He just enjoys as if there's a parachute coming down, nicely. And then when he falls down also just gets up, laughs, smiles at everyone. He doesn't understand why everybody is worried. Because in that innocence he knows that he's looked after. He's protected. He knows that there is a power which is much higher than him, and he does not have to worry. Then we start putting ideas into the head of the child. And that is how he starts losing his power of innocence. And he becomes a coward. He becomes a cunning fellow.
he becomes an unrighteous personality. But still we would say that the innocence of children is innocence of ignorance. In a way. Because they do not know the dangers of life. But the light of innocence knows all the dangers and also knows how to get rid of it. Also knows how to be away from such a person. There was a wise man who was going on a staircase. There was a stupid man coming from the other side, foolish man. So foolish people are always aggressive. That is one of the signs, because they have inferiority complex. So the foolish man says to the man who was coming up, he says, one had to move on one side. So he says, I don't move for fools, the foolish one says. So the wise man says, I do, and he moved. That's how the light of innocence tells you how far to go with a person, how far to talk to a person, how far to indulge in another person's personality or his problems. Otherwise he deceits. He understands that this gentleman is a stupid fool, so I move for a fool like that. He doesn't pay attention to such a person. He doesn't bother about such a person. This is the light of innocence which gives you discrimination. How far to go with others? I love a person. There are many, I love him. All right. Another person may kick you, may hit you, may trouble you, may become absolutely, horribly possessed, but still you are just mad or in love with that person, without any self-respect. This comes because there is no... You may be innocent in a way, in a worldly manner, but you are not enlightened and innocent. When you are enlightened and innocent, then your innocence is a power which gives you, first thing is discretion. Supposing you take a light in your hand. Now you know whether it is a snake or a rope. But if there is no light in your hand, you cannot see. But even supposing it's a snake, you might run away. Or if you are a stupid fool, you will say, all right, come and bite me. I would like to see how it works. Children are there. But if you are an enlightened person, then you will tell the snake, now let me be alone, all right? Bye-bye. And the snake will know and it will go away. Or if the snake is a sinister one, you may just look at the snake and snake might run away. So this power of innocence is a very, very important thing. And that comes to us through our enlightenment alone. So we are, say, in a state which is ignorant and innocent. Innocent and ignorant. Then people are no more innocent nor ignorant, but they are not enlightened. They become cunning. If they don't have both the qualities, they are neither ignorant, so-called, they have got knowledge, they are good at everything, they are well-known people for their intelligence, brilliance, everything, so they are knowledgeable, so-called. So such people we could call as the people who have got the knowledge in the worldly sense. But
They have no innocence. So they start devising methods. The innocence which is there, which puts a little control over such a mind, is lost. Because they think innocence is stupid, They don't respect their innocence. So they start maneuvering people, doing violent things, doing harmful things, saying nasty, sarcastic things. All these things the brain starts working. Because it cannot get back to its innocence. So we don't like such people later on, we don't want them. Then they develop ideas that we are higher people, we are chosen people, we are better people. Then they develop all these ideas. Then all of them club together. So ignorance is added as a so-called knowledge, you see. Inside is completely ignorance. Outside is knowledge. And added up like that. They do not want to seek there, inside. And they are satisfied with their outside so-called knowledge. And they go ahead with it. And once they break their heads, then they realize, oh God, what was it? Inside is all darkness. We cannot live with all the windows closed hermetically and the sun shining outside. We have to have light inside to see for ourselves what are we, what are our powers, how far we can go, how we are working out ourselves, our lives, our aims. Now the enlightenment, as the enlightenment you see here is of these lights, is manifested within you as vibrations, as Chaitanya, as light. So the Chaitanya itself is the light. But the difference between this light and that light is such that this one will only tell you as far as your eyes are concerned. It will tell you that it is a stone, or it is a wood, or it is a house, or it is a face of a man, anything, this light. But it won't be able to tell you whether this person is good or bad, whether this house is vibrated or not, is auspicious or not. So it doesn't give you auspiciousness, the idea of auspiciousness. So we are talking of Ganesha's innocence, which gives us sense of auspiciousness, and ourselves also makes it auspicious. This is how the Chaitanya itself is enlightenment. Chaitanya itself is enlightenment. It relates to you all the knowledge which it has. Now imagine what a micro arrangement it is. That the Chaitanyas which are small, like we can say little round valayas, small ones, they have intelligence in them and discretion built in them to tell you whether a person is good or bad. You have got it, Sahaja Yoga, so in a simple way. So we have not bothered to find out what your computer has got. It has got the knowledge. Now to know not only if the person is good or bad, but what troubles that person has got. Now this light can go up to one dimension of a person, how he looks, how he walks, everything. And if you start imagining something, if you start imagining
and saying that I feel this way, I think this way. Not all right. Huh? You can't hear me? Upstairs on the baby's hall. Huh? On the baby's hall. What is it? There is a video for the mothers with the children and they come here. It's upstairs. Upstairs. I didn't hear. What is it? There's a children's room upstairs for children. It's a video for children and mother, but they cannot hear it. But it's another problem. It's nothing to do with you. It's a problem there. Oh, I see. But the children are here. Babies, mothers and babies. Oh God. Somebody has to go and fix it up, isn't it? I think you should have tested it before, isn't it? All right. So the Chaitanya that is within us, which is flowing out, which we are receiving from all over, is all pervading, is in every molecule pulsating, which gives us knowledge about each and every matter, each and every animal, each and every human being, and each and every deity. Without this light, you could not have recognized me. You could not have recognized any deities. You could not have known your position in life and your aims in life. You would not have known what is your purpose of life. Why are you here? Are you here just to make some money, put some in the insurance, some in the shares? Of course, now nobody will do that. And get some house and dance on the fingers of your wife, or the wife has to dance as the dictates of the husband. To bring up children somehow. Are you here for that? This Chaitanya tells you very clearly, no. Because if you get more involved into these things and become completely cut off from the collective happenings, then this light goes off. As soon as this light gets disconnected, you can't have any light. So any connection, whatever you have with the vibrations, has to be very strong and has to be absolutely intact and steady. For example, if there's a light which is not steady, which is moving, you can't understand things properly. Though the vibrations know everything, but how will they communicate this to an instrument which is not perfect? Which does not respect vibrations? Which does not communicate with the vibrations? Please take the child out. Don't try to push the... No, don't do that.
जय श्री माता जी। अभी यही चैतन्य पे से जुड़े हुए with this enormous, powerful Chaitanya that you are connected to. Observing of top of our head, observing both our arms. We will pray to this Chaitanya. ये चैतन्य की प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, we pray to you in this form of Param Chaitanya to make us all the conduit of divine love, conduit of spreading this Sahaja to millions and millions of seekers in this world. श्री परम चैतन्य, श्री माता जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आप हमें ये लाखों के तादाद में ये जो सीकर्स है इन सब को आपका प्यार पहुंचा सके। मदर, प्लीज अरेंज programs so that we can spread this love to millions of people. O Param Chaitanya, we pray that this hatred in this world is destroyed. Param Chaitanya, we pray that this war between Russia and Ukraine is stopped, and all other wars that are slowly coming up be stopped, and the message of love of Shri Mataji spread all through this world. माँ, हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी युद्ध चल रहा है वो बंद हो जाए और पूरा प्यार का माहौल, आपका प्यार का माहौल पूरी तरह ये दुनिया में फैल जाए। हम पूरी तरह ये परम चेतन से को पकड़े हुए महसूस करते रहेंगे क्या हो रहा है। We will continue to enjoy the deep connection we have this with this Param Chaitanya and see what's happening in our brain, what's happening in both arms. मस्तिष्क में क्या हो रहा है, मस्तिष्क के ऊपर क्या हो रहा है, दोनों हाथों में क्या हो रहा है, महसूस करते हुए रहेंगे। महसूस करते रहेंगे पूरी तरह ये सहस्रार खुला है कि नहीं, कितना दूर तक खुला है और सुषुम्ना नाड़ी में क्या हो रहा है। You continue to observe the Sahasrara. How wide, how high is it, and what's happening in our Sushumna Nadi. As we pray again, Shri Mataji, please give this depth to all the Sahajogis in the world. Shri Mataji, यही गहराई, ध्यान का गहराई सभी को दे दीजिए माँ, सभी सहयोगी को दे दीजिए और आप पूरी तरह उन सब में बस जाइए माँ। Mother, we pray that you enter through the Sahasrara into the Brahmarandra, into their Sushumna Nadi and fill every cell with your vibrations to all the Sahajogis. Let all the people who are on the borderline, who are still not understanding Sahaja, be filled with these vibrations so the knowledge automatically flows.
कि माता जी हम सबका सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह और चौड़ा बना दीजिए माँ। श्री माता जी, प्लीज मेक आवर सुषुम्ना नाड़ी more wide so that we can accommodate you fully. Shri Mataji, make our heart wide so that we can host you fully. We can host you with all our love. माँ कृपा करके हमारे हृदय को पवित्र, पावन और विशाल बना दीजिए माँ, ताकि हम आपके पावन चरणों को हमारे हृदय में पूरी तरह बसा सके। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय को चौड़ा बना दीजिए माँ, और हमारे हृदय की चौड़ाई थोड़ा दिखा दीजिए माँ। श्री माता जी, प्लीज मेक आवर हार्ट huge and show us how wide our heart is माँ। We will remain a स्थित प्रज्ञ। ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति में 5 मिनट के लिए ध्यान में रहेंगे। We'll stay in meditation in this स्थित प्रज्ञ state for 5 minutes without moving.
जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी को जोड़ेंगे। Join both our hands towards Shri Mataji. Shri Mataji, thank you very much for this bliss. Thank you very much for coming in us fully, Shri Mataji. Shri Mataji, thank you very much for broadening our hearts and letting us absorb you into us fully with whatever small cells we have. You have given us an opportunity to absorb you, Shri Mataji. Thank you very much, Shri Mataji. Shri Mataji, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माताजी और ये सुंदर से ध्यान के लिए, इस सुंदर सा अनुभव के लिए कि आपको हम पूरी तरह अपने अंदर समा लें। थैंक यू वेरी मच। अभी कुंडली उठा के बंधन लेंगे। विल रेज और कुंडली टेक बंधन। जय श्री माता जी। अभी हम 2 फुट सोक कर लेंगे। We will clear out whatever negativity, whatever imbalance is there in us with 2 foot soaks. ये मेडिटेशन में माँ ने पूरी तरह साफ कर दिया है, मगर फिर भी अगर कोई भी अगर थोड़ा सा नेगेटिविटी बचा है वो फुट सोक से हम अभी क्लियर कर लेंगे। सो 2 मिनट में फुट सोक रेडी करते हैं। We will arrange for 2 foot soaks in 2 minutes. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप सब लोग रेडी हो? पीपल आर रेडी? दो मुट्ठी पर नमक, टू फिशफुल ऑफ सॉल्ट। 2 मुट्ठी पर नमक डाल देंगे। We are doing foot soak.
Okay. We'll give bandhan to water. Om Tvameva Sakshat Shri Samudra Devta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Deve Namo Namah. Shri Mataji, please make this water like sea water and make the sea water remove all the imbalances in our chakras and nadis. दोनों पैर पानी में. We'll put both our feet in the water. Right hand towards Shri Mataji, left hand towards sky. Right hand Shri Mataji को और left hand आकाश की ओर. भैया बंधन लगाना है क्या अब? नहीं, अभी बंधन लगा लिया ना हम थोड़ी देर पहले. अच्छा अच्छा. राइट हैंड श्री माता को और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर. बस आप खोल के श्री माता को बिंदी देखते रहेंगे या पावन चरणों को देखते रहेंगे. We'll keep looking at Shri Mataji's bindi or Shri Mataji's lotus feet. Just 15 minutes, just observe. Let all the heat from the right side go away. Shri Mataji, कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी में जो भी असंतुलन है उसे ये पंच तत्वों में लीन कर दीजिए. Shri Mataji, whatever imbalances are there in our Pingala Nadi, please dissolve them into these 5 elements. जैसे सब क्लियरेंस में हम करते हैं, हम अपना फुट सोप या कैंडलिंग में पहला हम निर्विचारिता स्थापित करते हैं. We establish the निर्विचारिता in the first 5-10 minutes.
Then after that we establish our witness state. हम हर क्लियरेंस में अपना विलंब बनाते हैं, अपना निर्विचारता बनाते हैं और उससे ज्यादा साक्षी तत्व अपने में स्थापित करते हैं। और उसी साक्षी तत्व में हमें मालूम पड़ता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, पूरा ये परम चैतन्य करता है या श्री माता जी करती है, और उससे निर्विकल्प आता है। In all our clearances, we become aware that we don't do anything. Everything is done by this Param Chaitanya and by Shri Mataji. And as our witness state goes deeper and deeper, which we establish in these clearances, the Nirvikalpa states get settled nicely. Nirvikalpa is that state of knowing that we don't do anything. Everything is done by Shri Mataji. But we can certainly put our hand towards Shri Mataji. That is something that we do. निर्विकल्प यानी हमें ये पूरी तरह एहसास हो जाना कि हम कुछ नहीं करते, ये परम चेतन ही सब कुछ करता है, ये या श्री माता जी सब कुछ करती है। अगर हम कुछ करते हैं तो हाथ श्री माता के सामने फैलाते हैं, बाकी सब माँ ही करती रहती है। तालू भाग से महसूस करते रहेंगे, राइट हैंड की सभी उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही कि नहीं, लेफ्ट हैंड से हवा आकाश में जा रही कि नहीं। We'll continue to observe. If you are absorbing cool air in all the right hand fingers, and if you are ventilating from our left arm. One more thing that we learned recently is that if we are thoughtless, the salt mixes fast with this water in the food soaked up. हमने ये भी देखा, अगर निर्विचारता अच्छी हो गई तो ये नमक भी बहुत अच्छा पानी में मिल जाता है। तो हम देखते रहेंगे अपना सुषुम्ना बन रहा है कि नहीं, ये पानी में नमक मिल रहा है कि नहीं, महसूस करते रहेंगे, सब कुछ साक्षी तत्व में बिना कोई रिएक्शन। We observe everything, enjoy everything, appreciate everything. The Sushumna, appreciate this salt dissolving in water, appreciate how Shri Mataji does everything for us.
चलिए अभी ईगो सुपर ईगो ड्रॉप करते हैं. विल ड्रॉप ईगो सुपर ईगो, meaning we'll cross the hands at the level of the ajna, pull ego super ego along our ida pingla through the legs and put it in water 7 times. 7 बार ईगो के सुपर ईगो को पैरों के तले पानी में डालें. 7 बार. Now we'll drop from स्वादिष्ठान. पीछे से स्वादिष्ठान से नमक पानी में 7 बार डालें. फिर अभी शोल्डर्स अपना ललित चक्र श्री चक्र, वहां से कोई भी गर्मी है तो हाथों के तले निकाल के वो भी पानी में डालेंगे. We'll drop any heat that is there in the shoulders from Lalit Chakra, Shri Chakra and drop it into water 7 times. Now we'll wash our feet. अभी पैर धोलेंगे and change into the next foot soak tub. The अगला foot soak tub का arrangement कर लेंगे 2 मिनट तक. पानी को बंधन देके फेंक दीजिए. We give bandhan to this water and then throw it off. बहुत लोग को पहला फुट सोक में ही बहुत क्लियरेंस हो गया होगा. Many people must have noted the clearance in the first foot soak itself. चलिए 2 मुट्ठी भर नमक डाल लेंगे. We'll put 2 fistfuls of salt in the water. Left hand towards Mataji with right hand bandhan. ओम त्वमेव साक्षात् श्री समुद्र देवता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः. Shri Mataji, please make this water like sea water and make this sea water remove all the imbalances in our chakras and nadis. अभी दोनों पैर पानी में. We'll put both our feet in the water and we'll put our left hand on the liver. Left hand liver पे रखेंगे. Right hand is towards Shri Mataji, left hand is on the liver. हम लोग अपना लिवर को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं. Left hand on the liver.
अभी लेफ्ट हैंड आकाश की ओर. Now again our left hand towards the sky. Right hand towards Mataji. Left hand towards sky. अपना राइट हैंड शिमासी जी की ओर है, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर है. राइट हैंड इज टुवर्ड्स शिमासी जी, लेफ्ट हैंड इज टुवर्ड्स स्काई. जय श्री माता जी. Reshma Didi, Sorry to interrupt, Bhaiya. What is going on? Foot circle? the second foot soak. We are almost ending the second foot soak. Yes, finishing now? Yes, yes. In 2 minutes we'll finish. Okay. I couldn't come to know YouTube also. Okay, sorry. Okay. चलिए अभी फिर से ईगो सुपरी को पानी में डाल देंगे. अभी देखिए फिर से सॉल्ट, नमक पिघल गया कि नहीं, मिक्स हो गया कि नहीं. ऑब्जर्व द सॉल्ट इज नाइसली मिक्स्ड. ईगो सुपरी को 7 टाइम्स पानी में, 7 टाइम्स ईगो सुपरी को इनटू वाटर.
फिर स्वादिष्ठान से, फ्रॉम स्वादिष्ठाना 7 times put it into water. Whatever heat is there in स्वादिष्ठाना, from behind, पीछे से 7 बार स्वादिष्ठान के गर्मी पैरों के तले पानी में डालो. फिर शोल्डर्स, ललित चक्र, श्री चक्र. भी पैर धो लेंगे. विल वॉश योर फीट. क्यों बंधन टू वाटर, पानी को बंधन देंगे. फिर कुंडली उठाकर बंधन लेंगे. विल रेज और कुंडली टेक बंधन. अभी शू बीट के लिए रेडी हो जाएंगे. विल गेट रेडी फॉर शू बीट विथ 2 चप्पल्स. दोनों चप्पल चाहिए शू बीट के लिए. अभी ये देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को. ये देखिए, अपना वेबसाइट जो है ये है viratdailyMeditation.in. अब बहुत लोग को डाउट आता है कि क्या टाइमिंग है, क्या स्केड्यूल है. ये पूरा स्केड्यूल इसमें है, ये वेबसाइट पे. आप जहां से भी हो, wherever you are from, India, Malaysia, Singapore, whichever, you select the time and you will know, you click on it and you will know the time. और जैसे यहाँ हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन 5 बजे को है, शू बीटिंग अभी 6:45 नॉर्मली होता है. सिंस सैटरडे संडे है तो अभी 7 बजे है, ये दिखाता है यहाँ. और फिर अपना कैंडलिंग और फुट सोक. और अगेन इवनिंग शेड्यूल में सेम. आपको ये सब डिटेल्स यहाँ मिलते हैं. यू गेट ऑल दिस डिटेल्स हियर ऑन दिस वेबसाइट. एंड अगर फीडबैक सुनना है या बताना है, यू कैन गिव योर फीडबैक हियर. शेयर योर एक्सपीरियंस. यहाँ जाके आप क्लिक करके यहाँ एक्सपीरियंस आपका डाल सकते हो. क्या पढ़ना है तो यू कैन रीड, यहाँ पढ़ सकते हो आप experiences. So you can read your experiences. You can read experiences here or you can write experiences here. Okay, चलिए हम लोग अभी शू बीट के लिए रेडी हो जाते हैं. जय श्री माता जी. जयश्री दीदी, जय श्री माता जी. आपका वीडियो अगर स्टार्ट हो गया तो आई कैन डू स्पॉटलाइट. दीदी डेमो दे रही है, घर से भी कैसे कर सकते हो आप. बहुत लोग पूछते हैं ना. मैं वो भूल गई थी चार्ज में रखने के लिए. ओके ओके ओके. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. श्री माता जी. जय श्री माता जी. देखेंगे अभी कितना देर हमारा ब्लूटूथ वर्क करेगा.
जय श्रीमती जी, सब तैयार है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ रेडी। हाँ जय श्रीमती जी। जय श्रीमती जी। सब लोग आकाश की तरफ नजारा करेंगे। हम जो तैयार नहीं है उनके लिए आधा मिनट वेट करेंगे। दोनों हाथ आकाश की तरफ, लुकिंग टुवर्ड्स स्काई, बोथ द हैंड टुवर्ड्स स्काई। लेट अस लुक स्काई विद भक्ति, आकाश तत्व, एंड वेट half an a minute to get ready all the yogis. आकाश की तरफ नजारे, चित्त सहस्रार में भक्ति भाव से हम आकाश देवता को निहारेंगे। आकाश को देखिए, आपको ब्लू से ज्यादा पिंक पिंक दिखेगा, गुलाब की रंग ज्यादा दिखेगा। महालक्ष्मी तत्व, हम सब तैयार है। तो जिसने म्यूट नहीं किया है प्लीज म्यूट कीजिए। दीदी मैं मुझे बार बार फोन उठाने की जरूरत ना आना चाहिए। कोई तो म्यूट नहीं किया है, किचन में काम कर रहे हैं, म्यूट कीजिए प्लीज। आशा दीदी, आशा दीदी प्लीज हाँ म्यूट जी। कीजिए, म्यूट कीजिए प्लीज। आकाश की तरफ दोनों हाथ, चित्त सहस्रार में नजर आकाश की तरफ, भक्ति भाव से आकाश देवता को निहारेंगे। आशा नाम से जो है जूम हाँ जी। में, हाँ जी। पता नहीं, दो आशा होंगे। म्यूट कीजिए। वो बाज लास्ट वाला वो है ना माइक, उसको टच कीजिए, उसमें आना चाहिए लाल वाला। मेरा तो म्यूट है जी। हाँ, फिर दूसरा कोई आशा नाम पे होगा, वो अनम्यूट है और कान में आवाज आ रही है मुझे, इसीलिए। वो म्यूजिक भी चल रहे हैं उनके घर में, कुछ तो है तो। नहीं नहीं, हमारे मैं तो बालकनी में बैठी हूँ और है ना, दूसरा बस की कोई, आवाज है। वो बच्चों की बस दूसरा आ रही कोई, है स्कूल की। ठीक है। अभी आप बात किए ना, बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। दोनों हाथ आकाश की तरफ। हे आकाश देवता, कृपा कर हमें आकाश तत्व प्रदान कीजिए। आपकी सहायता के बिना विराट में पहुंचना कठिन है, नामुमकिन है। कृपा कर हमें आकाश तत्व प्रदान कीजिए। हे आकाश देवता, इट इज इम्पॉसिबल टू रीच विराटा without your help. Please bless us with sky element, ether element, आकाश तत्व। Let us feel vibrations after each and every prayer, being in thoughtlessness and in Sahasrara. भावना, भक्ति की भावना होना बहुत जरूरी है। Let us pray with bhakti, not on lips only. Now let us chant Allahu Akbar 16 times. अल्लाह अकबर अब हम 16 बार बोलेंगे। दोनों हाथ, उंगलियां, विशुद्ध की उंगली कानों में टाइट करना है, आकाश की तरफ देखना है। वी हैव टू लिफ्ट आवर थ्रोट फुल्ली, फेस टुवर्ड्स स्काई विद ओपन आईज, चित्त इन सहस्रारा, अटेंशन इन सहस्रारा,
हम अल्लाह बोलते समय मुंह पूरा आवाज नहीं निकालेंगे तो भी कोई बात नहीं, मगर मुंह को पूरा खोलना है अल्लाह बोलते समय। और ऐसे हम अल्लाह अकबर बोलेंगे। एक बार बोलने के बाद उंगली एक बार निकाल के रखेंगे और फिर से टाइट करके उसके बाद 16 बार बोलेंगे। वी हैव टू लिफ्ट आवर थ्रोट फुल्ली, फेस टुवर्ड्स स्काई विद ओपन आईज। व्हेन वी chant Allah, we have, though we won't bring noise, voice, big noise or big voice, we have to open our mouth fully to enter the Akash Tattva, to enable the, make it able to Akash Devata to enter in more quantity to Vishuddhi Chakra. So after chanting one time, we remove fingers from ears and once again we lock, and after that we chant Allahu Akbar, so 16 times. हम अभी शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। Once again, both the hands towards sky. Observe your physical Vishuddhi also. गर्दन में जो विशुद्धि के गले में है चक्र, पीछे में से आप महसूस कीजिए ठंडापन, कानों में ठंडापन आया क्या? आएगा। जिसको नहीं आ रहा है तो आ जाएगा करते करते। Let us fold our hands and bow down to आकाश देवता। दोनों हाथों को जोड़ के आकाश देवता को प्रणाम करेंगे। थैंक यू आकाश देवता, धन्यवाद, आपने हमें आकाश तत्व प्रदान किया। थैंक यू आकाश देवता। दोनों हाथों में जो चैतन्य है, चित्त सहस्रार में निर्विचारिता में जाएंगे। लेट अस गो इनटू थॉटलेसनेस, अटेंशन ऑन सहस्रारा। ऑब्जर्व बोथ द हैंड्स। विद दिस वाइब्रेशन लेट अस टेक बंधन। इस चैतन्य से हम बंधन लेंगे। महसूस करेंगे कुंडली माँ को। कवच धीरे से लेंगे। लेट अस टेक कवच slowly, putting attention on vibrations, receiving from left hand and flowing from right hand. लेफ्ट हैंड से चैतन्य को लेंगे, राइट हैंड से हमारे शरीर के आजू बाजू में धीरे से फैलाएंगे। सर के ऊपर से लाना है हाथ, सर के नीचे से नहीं।
दोनों हाथों में जो चैतन्य है उस चैतन्य को हम जहां शोभित करने जा रहे हैं उधर फैलाएंगे. Let us flow some vibrations or cleanse this place where we are going to do shobit. बंधन देंगे. Let us give बंधन. दोनों हाथ धरती माता पर. Let us seek permission. Here, पूर्ण चित्त सहस्रार में हम निर्विचारिता में चले जाएंगे. भूमि माता के सहायता से सुषुम्ना बन जाएगा. वैसे हमने सुबह से चित्त में सहस्रार में सुषुम्ना में ही है. इसको पक्का करेंगे. हे श्री गणेशा, कृपा कर हमें सामूहिकता में शोभित करने की अनुमति प्रदान कीजिए और समस्त विघ्नों को दूर करने की कृपा कीजिए. हे श्री गणेशा, प्लीज परमिट अस टू डू कलेक्टिव शोभित एंड प्लीज रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स. हे आदि भूमि माता, कृपा कर हमें क्षमा कीजिए. हमें सामूहिकता में शोभित करने की अनुमति प्रदान कीजिए और समस्त बाधाओं को दूर करने की कृपा कीजिए. आदि भूमि माता, प्लीज फॉरगिव अस. Please permit us to do collective shobit and please remove all the obstacles, badhas. श्रीमती जी, कृपा कर हम सबसे सामूहिकता में शोभित करा के लेने की कृपा कीजिए. हम सबको शुद्ध करने की, निर्मल बनाने की कृपा कीजिए. श्रीमती जी, प्लीज make us to do collective shobit and remove all the obstacles and make us pure, nirmal, shuddha. Let us feel the vibrations. Feel the Sushumna and Brahmarandra, Kundalini, Mother Kundalini also. चित्त सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में सुषुम्ना बन गया है. कुंडलिनी माँ को कहाँ है देखेंगे. दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे. Let us bow down to do pranamas to Mother Earth. आज हम 2 राउंड शोभित करने जा रहे हैं. सत्य शोधकों को सत्य मिलने में अड़ाने वाले सजग प्रचार प्रसार के लिए हम पहला राउंड करेंगे और सेकंड राउंड पर्सनल राउंड. Today we are going to do 2 rounds of shobit. First round is for obstacles in prachar prasara and the truth shodhakas, searching for truth, peoples getting obstacles in getting truth realization. For that one, first round. Second round is personal round. चैतन्य देंगे थोड़ा. विद विशुद्धि फिंगर से एक सर्कल डालेंगे. चित्त सहस्रार में बी इन थॉटलेसनेस, अटेंशन ऑन सहस्रार, निर्विचारिता में रहेंगे और चित्त सहस्रार में रखे हुए पूर्ण कार्य होने तक वैसे रहेंगे. All the obstacles in the path of the truth seekers getting the truth through प्रचार प्रसारा प्रोग्राम्स. सत्य शोधकों को प्रचार प्रसार के माध्यम से सत्य मिलने में अड़ाने वाले सभी प्रकार के अड़चन और बाधा में प्रचार प्रसार के होने में अड़ाने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं हमारे यहाँ
मार्च 3, 3, 4, 5, 3rd, 4th, 5th को we have realization program in our village through Krishi Mela, Sahaj Krishi. So I am writing that one also. I request you also to write, because here no Sahaj Yoga. We have to reach all the seekers. So let us write Sahaj Yoga program in Hiriyadka, Udupi, going well, and all the seekers getting their self-realization. Obstacles in Sahaj Yoga Prachar Prasar in Hiriyadka, Udupi, and the truth seekers getting their obstacles in their getting their truth. हिरियडका में, उडुपी में सहयोग प्रचार प्रसार होने में आड़ आने वाले और सत्य शोधकों को सत्य मिलने में आड़ आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी, हमारे यहाँ मोहनलालगंज सेंटर में भी थोड़ा बाधाएं हैं, तो सेंटर लगने में मतलब कि थोड़ा कलेक्टिविटी को ये वो होता है ना, अटेंशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ के लिए भी थोड़ा वो करवाइएगा। देखेंगे अभी इसमें हम कैसे कवर करेंगे, देखेंगे। इधर हम इसमें सभी समस्त सहयोगी इस प्रोग्राम में समस्त रियलाइजेशन प्रोग्राम, नॉट ओनली दिस, इन ऑल रियलाइजेशन प्रोग्राम्स द योगीज इन्वॉल्वमेंट एंड डेडिकेशन में आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं, द ऑब्स्टिकल्स इन द participation of all the yogis in the Prachar Prasara programs, and the cooperation between the yogis and love, obstacles in the lacking of love between the yogis, सहयोगियों के बीच में आपसी प्रेम की कमी और उन लोगों की समन्वय की कमी, lack of coordination and unity. Yes, lack of coordination and unity in yogis in organizing Prachar Prasar programs. और योगीस की इच्छा की, the desirelessness of yogis in participating and spreading the self realization program, प्रचार प्रसार में भाग लेने में और सत्य को बोलने में सहयोगियों के अंदर की इच्छा शक्ति की कमी, एंड ऑल द जो आत्म साक्षात्कार पा लेते हैं उनको सेंटर में जाने में, सेंटर मिलने में और सेंटर में जाने में और उतरने में, सत्य में उतरने में आड़ आने वाले, दीदी आपका ये पॉइंट इधर कवर करेंगे हम, आड़ आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधा में, सत्य साधकों को सत्य मिलने में और सत्य को अपनाने में और सत्य में उतरने में आड़ आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं इसमें आ जाएगा। सेंटर की कमी, सेंटर में आने की इच्छा की कमी और लगे रहने की, रोज ध्यान करना है, फुटसो करना है, वो सब करने की इच्छा की कमी। इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या? कोई पॉइंट्स देने वाले? राम भैया कुछ लिखना है? इसके अलावा सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं इन द पाथ ऑफ ट्रुथ सीकर्स गेटिंग देयर ट्रुथ, सत्य शोधकों को सत्य मिलने में आड़ आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं। हो गया? चित्त सहस्रार में और सहस्रार से ऊपर जाएंगे, और इसको बंधन देंगे।
Let us give bandhan with vibrations, keeping attention on vibration and being in thoughtlessness. Let us give bandhan धीरे से बंधन देंगे चित्त सहस्रार में और वाइब्रेशंस में, निर्विचारिता में रहते हुए बंधन देंगे। Let us offer this at the lotus feet of श्री माता जी। श्री माता जी के चरणों में छोड़ देंगे। अपने भावनाओं के साथ अपने अपने भाषाओं में हम प्रेयर करेंगे। Let us pray with Shri Mataji with our emotions and in our language. Shri Mataji, please remove all the obstacles from Prachar Prasara and from the path of the truth seekers. All truth, yes, truth seekers. Bless the whole world with the realized people. पूरा धरती आत्म साक्षात्कारियों से भरे, ऐसे हमारा इच्छा पूर्ण रूप से हम श्री माता जी के चरणों में छोड़ दें। Now let us take left chappal and give bandhan. Now, as usual, looking towards sky, being in thoughtlessness, observing our sahasrara and left palm, we should beat slowly. While beating also we can pray in our heart. हम हमेशा की तरह आकाश की तरफ देखते हुए चित्त को और सहस्रार को और लेफ्ट हैंड को महसूस करते हुए पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए हल्के हाथों से इसको शुभिट करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। आकाश की तरफ देखेंगे। शुभिट करते समय भी हम हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं। श्री माता जी कृपा कर सत्य शोधकों के आत्मोन्नति के मार्ग में अड़ाने वाले सभी प्रकार के अड़चनों को, जो हमको पता नहीं है आपको पता है माँ, सब कुछ दूर करके सबको सत्य मिले, आपका आशीर्वाद मिले, ऐसे कृपा कीजिए श्री माता जी। नेक्टर इज फ्लोइंग इन, चैतन्य अंदर आ रहा है सहस्रार से, विशुद्धि में है तो थोड़ा हम राइट हैंड में लेके जाएंगे और विशुद्धि में थोड़ा देर रहने देंगे। लेट अस अलाउ द नेक्टर टू बी इन विशुद्धि चक्र फॉर सम टाइम। Let us cool down our Vishuddhi, and after that we allow it to move down in our certain system. थोड़ी देर के लिए विशुद्धि में रखेंगे, विशुद्धि पूरा कूल होने देंगे, ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम नीचे उसको जाने देंगे।
वो अपने आप नीचे जा रहा है, पूरा हार्ट भी ठंडा हो गया है, जाने देंगे. Allow the nectar, it itself is moving to heart, half the school now. Let us allow it to Bhavsagara. Bhavsagara में जाने देंगे. भवसागर कूल हो रहा है, नीचे की तरफ थोड़ा ठंडा होने देंगे. भवसागर is getting cool, upper portion is cool, let lower portion also get to cool. अब हम रुकेंगे. Let us stop now. Bhavsagar is nicely cooled. Let us collect and throw towards sky. इसको इकट्ठा करके आकाश की तरफ उड़ाएंगे. Let us once again vibrate this place. One more round, personal round. Let us write our name. अपना अपना नाम लिखेंगे. अहंकार, प्रति अहंकार, अहम भाव, कर्ता भाव, ईगो, सुपर ईगो, कर्ता भाव, inferiority and superiority complex, श्रेष्ठता का भावना और आत्मग्लानि की भावना, अगुरु एंड कुगुरु प्रॉब्लम्स, अगुरु और कुगुरु से आने वाले सभी प्रकार के समस्याएं, अशुद्ध विद्याएं, इधर आप लिख सकते हैं भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या, स्मशान विद्या, मुसलमान विद्या इत्यादि विद्याओं से मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में अड़ाने वाले बाधाएं. Because of all these false knowledges, the problems in my ascent. Bad attention, poor attention, ashuddha chitta, chanchala chitta, attention of yogis on me, we can write others on me, attention of non-yogis on me,
सजयोगियों के मेरे ऊपर रहने वाला चित्त, नॉन सजयोगियों के मेरे रहने वाला चित्त। अगर किसी पर्सन के आपके मन में है उसका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा चित्त है, उसके नाम लिख के भी आप इधर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी in mind thought in mind that that person is having bad attention on me, you can write his name and after that the bad attention of this person on me, and our moving attention on others, it may be yogis or non yogis, it also troubles them and us also. हमारा बार बार किसी के ऊपर जाने वाला चित्त, अगर आपका किसी एक के ऊपर बार बार जा रहा है, उसका नाम लिख लीजिए। ये उसको भी तकलीफ देता है, हमको भी तकलीफ देता है, तो हम हमारा चित्त को हमारे अंदर लाने के लिए भी जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू bring back our attention within us, and all types of devil habits and practices within us, rakshasi vrittis and pravrittis, वो रिएक्शन भी हो सकता है, गुस्सा करना भी हो सकता है, और द्वेष की भावना भी हो सकता है, ऐसे कुछ। और अंदर एक बाहर एक, मुंह में राम राम बगल में चूरी बोलते हैं ना, और जगह जगह में रंग बदलना ऐसे बोलते हैं ना, वैसे जो स्वभाववादी दोष वो भी हम लिख सकते हैं। ये सब राक्षसी वृत्ति से। और lacking in innocence, all types of impure desires, अशुद्ध इच्छाएं, मन में बहुत अशुद्ध इच्छाएं आते हैं। मुझे ये फोन आता है, तो लिख लीजिए, हर एक के मन में कभी कभी आ सकता है। all types of impure desires, अशांति, असमाधान, असंतोष, असंतृप्ति, न्याय अश्रद्धा। न्याय प्रदान भी होता है ना कोर्ट कचहरी की बात काम में। हाँ हाँ, वो भी हम आएंगे नीचे। हाँ, नीचे लिखेंगे। अश्रद्धा, अरिषड्वैरियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 subtle enemies। अप्रेम, संकुचित मनोभावना, त्यागशीलता की कमी। अधर्म, हमारे अंदर की अधर्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म अधर्म। अगर फैन चल रहा है, हम उसको ऐसे, कोई नहीं है फैन का इस्तेमाल करने वाला, हम उसको चालू रखेंगे, तो अधर्म, राष्ट्र धर्म के विरुद्ध में, क्योंकि इट इज नेशनल संपत्ति है, हमारा नहीं है। तो पानी चल रहा है, नल बार चालू है, हम उसको रोकेंगे नहीं, तो हमारा धर्म के क्षेत्र में कैचेस आएगा। ये इतना सूक्ष्म है, तो ये हमको अनजाने में ये सब हो रही है। ये श्रीमती जी एक स्पीच में बताए ना, अभी चक्र में आपको पकड़ आएगा। अगर आप टैप बंद नहीं करेंगे, नल पानी बह रहा है, लाइट स्विच ऑफ नहीं करेंगे, फैन बंद नहीं करेंगे, कोई उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला है, तो ये राष्ट्र धर्म के अंदर आएगा। राष्ट्रीय संपत्ति है, सबका है, हम उसको इधर वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हम अधर्म के अंदर डालेंगे। हाँ? और ऑफिस में भी हम लोग ऑफिस रिसोर्सेस वेस्ट करना। हाँ, सभी प्रकार के अधर्म। हाँ? अगर किसी के अंदर वो स्वभाव ज्यादा है, हम देखते ही उसको रहने देते हैं, तो आप लिख लीजिए, मेरे अंदर का ऐसा स्वभाव। नेशनल रिसोर्सेस को वेस्टिंग, फूड को भी वेस्ट करते हैं, अन्न को भी, हम कहाँ पर भी जाते हैं तो पूरा नहीं खाते हैं, तो वेस्ट करते हैं, फेंकते हैं। ये सब राष्ट्रीय, इसमें नेशनल रिसोर्सेस के वेस्टिंग में आ जाता है, धर्म आ जाता है। और साक्षी भाव की कमी, वो फैशन है किसी किसी के, है ना, इतना लेंगे, इतना खाएंगे और बाकी का वेस्ट कर रहे हैं। इट इज फैशन, बिकॉज दे वांट टू शो दैट I can throw this, that Anna, Brahma. साक्षी भाव की कमी, माधुर्य की कमी, चित्त स्थिर रहने की। तो चित्त का हो गया ना दीदी?
क्षमाशीलता की कमी, चित्त का इतना पॉइंट्स हमने लिखे ऊपर, चंचल चित्त लिखे है ना, चंचल चित्त लिखे हैं। हाँ। गिल्ट अपराध भाव की वो हो गया ना, इन्फीरियरिटी वो हो गया है, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी दोनों आ गया है, गिल्टी इन्फीरियरिटी में आएगा ना। सबसे पहले मैं वही लिखवा लेती हूँ हमेशा, अहंकार मीडिया प्रत्यहंकार के बाद में। मीडिया एडिक्शन, फैशन हाँ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्रीज। आएंगे। फॉरगिवनेस, लैकिंग इन फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता की कमी, समग्रता की कमी। एडिक्शन, सभी प्रकार के एडिक्शंस एंड अटैचमेंट्स, परिवार के साथ, वस्तुओं के साथ, मेटीरियलिज्म, इल्यूजन, भ्रांति में फंसे रहने का आदत, अच्छा लगता है हमको भ्रांति में रहना। और परिवार से आने वाले सभी प्रकार के अड़चने, समाज से आने वाले सभी प्रकार के अड़चने, वर्क प्लेस से आने वाले सभी प्रकार के अड़चने, सहयोगियों को, बहुत सारे सहयोगियों को तकलीफें हैं, आप इधर लिख लीजिएगा। मेरे साथ होने वाले हो रही धोखाधड़ी, और डॉक्टर भास्करन, यू कैन राइट हियर योर पॉइंट। एनीहाउ वी आर डूइंग कलेक्टिव शुड बी, प्लीज राइट। वो कोर्ट दीदी, कोर्ट का जो है कानूनी तरीके से, हाँ आप लिख लीजिए जो लिखना है आपको, है ना। हाँ 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 Dr. Bhaskaran, are you there? Please write the point what you want to write. Anyhow, we are doing collective shubit, beating together. Yes, sir. Jai Yes. Shri Mataji Devi. Jai Shri Mataji. The legal issues from Dr. Bhadra Yes. companies. Yes, yes, yes. This is, we can't write that point because this one is personal, our personal circle. So you write personal circle and let us beat shoot together. Okay? Yes, yes. Jai Shri Mataji Devi. Jai Shri Mataji. शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं, सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं। ये मानसिक और भावनात्मक में हम हमारे साथ हो रही हैरेसमेंट जो है ये भी आ जाएगा। किसी कोर्ट से हो रही है हैरेसमेंट, या किसी कंपनी से हो रही है हैरेसमेंट, किसी ऑफिसर्स में ऑफिसर्स से हो रहे हैं हैरेसमेंट, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के, किसी को कुछ लिखना है तो लिख लीजिएगा। If anybody want to write any points, please write. निर्विचारिता की कमी, ध्यान में बैठने की इच्छा की कमी। ये 10th का बोर्ड चालू है ना, उसके लिए भी लिख ये पर्सनल में नहीं लिख सकते ना दीदी, ये इसी तक नहीं आए। ओके। बोर्ड में बच्चों को हम क्या शुभित करेंगे दीदी, मैं तो ग्रुप में इतना देखती हूँ मुझे हंसी आती है। ये सब जगह का इसके अंदर हम अटैचमेंट्स में कितना हम नीचे ला रहे। श्रीमती आज भी सुबह स्पीच में इतना संकलन किए तो इसमें कितना श्रीमती जी बता रहे थे, हम हमारा योगी का जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना है, हमको नीचे 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 नहीं लाना है। बच्चे पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा सभी प्रकार के अड़चने हो सकते ना दीदी। हाँ हेल्थ प्रॉब्लम, हाँ वो आ गया ना, हेल्थ प्रॉब्लम, शारीरिक, मानसिक और दैहिक समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम। जय श्री माता जी।
in the path of my ascent. All minute problems in the path of my ascent. मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाला सभी प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं. If anybody want to write both badas, you can write both badas. Come to Sahasrara, be in thoughtlessness and give bandhan. पूर्ण निर्विचारिता में रहेंगे. कितना भी पॉइंट आप लिखो, निर्विचारिता में नहीं है और वाइब्रेशन के ऊपर आपका अटेंशन नहीं है तो कार्यान्वित नहीं होगा. एक ही पॉइंट लिखो. एक्चुअली इसमें अहंकार प्रत्यहंकार के लिए और अगुरु कुगुरु के लिए ही इम्पोर्टेंस है. बाकी सब है ना, अटेंशन और ये इम्पोर्टेंस वाले छोड़ के बाकी सब अपने आप हो जाएगा. मगर हम निर्विचारिता में नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा. Please be in thoughtlessness. When we work with thoughtlessness, then only it affects, it works out. Otherwise, it will also one karma kanda, become one karma kanda. हम शोभित करते हैं फिर भी नहीं होता है तो निर्विचारिता में नहीं रहते हुए करेंगे तो नहीं होगा, ये कर्मकांड हो जाएगा. इसलिए निर्विचारिता में आ जाइए. तो उतना देर तक बंधन देते रहिए, निर्विचारिता में आने तक बंधन दीजिए. प्लीज गिव बंधन till you get nirvicharita, thoughtlessness. Keep your attention on vibrations, both the hands. ठीक है, नेक्टर तो अंदर ही आने को शुरू हो चुका है. तो वाइब्रेशन ऑफर करेंगे, श्री माता जी के चरणों में छोड़ देंगे. श्री माता जी, हम सबके आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के अड़चनों को, सूक्ष्माति सूक्ष्म अड़चनों को, बाधाओं को दूर करके हमें आपके श्री चरण कमलों की योग्य बनाने की कृपा कीजिए. Srimati ji, please remove all minute problems in the path of my ascent and please make us worthy of your lotus feet. अब हम राइट चप्पल लेंगे. बंधन देंगे, चैतन्य देंगे. As usual, looking towards sky, being in thoughtlessness, observing our sahasrara and left palm, we shove it slowly. धीरे से हम हल्के हाथों से शुभ करेंगे, आकाश की तरफ देखते हुए, निर्विचारिता में रहते हुए सहस्रार को और लेफ्ट हैंड को महसूस करते हुए करेंगे. Let us start now. माता जी, कृपा कर हमको योगी बनने में, हमारे अंदर के आंतरिक परिवर्तन होने में आड़ाने वाले सभी प्रकार के अड़चनों को दूर करने की कृपा कीजिए. श्रीमती जी, प्लीज रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स वी आर in we are getting inner transformation.
Let us take some portion of vibrations towards right hand. चैतन्य विशुद्धि में है, राइट हैंड में थोड़ा लेके जाएंगे और अंदर जाने देंगे, कहाँ जाएगा तो जाएगा. And allow it to, in the subtle system, wherever it want to go and feel, let it go and feel. पूर्ण संसार फ्लो है, दोनों हाथों में भी चैतन्य, दोनों हाथों में चैतन्य. महसूस कीजिए राइट हैंड आल्सो कूल नाउ. मेरे अंदर नाभि पूरा ठंडा हो गया है. चैतन्य अपने आप जा नाभि में, शायद मुझे नाभि में जरूरत था तो नाभि में जाके भर रहा था. अब हम रुकेंगे. Let us collect this and throw towards sky. इसको इकट्ठा करके आकाश की तरफ उड़ाएंगे. चैतन्य देंगे. Let us vibrate nicely. अच्छे से चैतन्य देंगे. वंदन देंगे. देखिए दोनों हाथों के भवसागर भी पूर्ण रूप से फ्लो हो रही है. पूर्ण palm, whole palm is getting vibrated, flowing. Bhavasagara is also nicely flowing. We can chant Shri Ganesh mantra here, or we can pray Shri Ganesha to establish Shri Ganesh Tattva in this place. ये श्री गणेशा कृपा कर इस जगह में श्री गणेश तत्व का स्थापना करने की कृपा कीजिए. Please establish Shri Ganesh Tattva in this place. अब हम चप्पल को भी शुद्ध करेंगे. Let us give बंधन to चप्पल. चित्त हम सहस्रार से नीचे नहीं लाएंगे. पूर्ण क्लाउड वाइब्रेट होने तक पूर्ण हम सहस्रार या सहस्रार के ऊपर रहेंगे. Let us vibrate chappals also, and let us clean our hands, giving bandhan.
दोनों हाथों को धरती माता के ऊपर रखें। थैंक यू श्री गणेश। थैंक यू आदिभूमि माता, आपने हमसे सामूहिकता में शोभित करा के हमारे आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के अड़चनों को दूर किया। थैंक यू श्री गणेशा। थैंक यू आदिभूमि माता, you made us to do collective shobit and removed all the obstacles in the path of our ascent. Thank you. Please receive our pranamas at your lotus feet. हमारे प्रणामों को आपके चरण कमलों में स्वीकार करने की कृपा कीजिए। थैंक यू श्री माता जी, आपने हमको शुद्ध करने की कृपा किया, हमसे सामूहिकता में शोभित करा के लिया। थैंक यू। आपके चरण कमलों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम कृपा कर स्वीकार कीजिए। Shrimati ji, you made us to do collective shobit and you cleansed us. Please receive our 40 koti pranamas at your lotus feet. Thank you, Shrimati ji. दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करेंगे and let us take बंधन with these vibrations. बंधन लेना। जय श्री माता जी। जय श्रीमती जी। मेरी हम अभी छोटी क्लाउड वाइब्रेट करेंगे, उसके बाद हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके श्रीमती जी मन की शक्ति दे और आरोग्य दे, एग्जाम को अटेंड कर सके, है ना। Let us take both the hands towards sky. If anybody want to move, please move. We will vibrate the clouds along with vibrating our back ajna. अगर किसी के पास सूरज है, सूर्य देवता आ गए हैं, सूर्य देवता के तरफ आप बैक आज्ञा रख के खड़े हो जाइए या आप बैठ जाइए। हम बैक आज्ञा क्लियर करते हुए क्लाउड वाइब्रेट करेंगे। लेट अस डू क्लाउड वाइब्रेट along with back ajna clearance because we are sun here. We have sun. I have sun. You can see in the mobile also. Let us pray. सूर्य देवता को प्रार्थना करेंगे। सूर्य देवता के तरफ चेहरा करके, हे सूर्य देवता कृपा कर हमें आपकी शक्ति दीजिए, आपके गुण दीजिए, आपकी निरंतरता प्रदान कीजिए, आपकी निरहंकारत्व प्रदान कीजिए, आपकी हिरण्य गर्भिणी शक्ति हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए, आपकी गुरु ज्ञान हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए, आपकी संतुलन हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सूर्य देवता कृपा कर हमारे बैक आज्ञा को और रीढ़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध होने दीजिए और पिंगला नाड़ी को संतुलन प्रदान करने की कृपा कीजिए। बैक आज्ञा को सूर्य देवता की तरफ रख के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ आकाश की तरफ। हे आकाश देवता कृपा कर हमें शुद्ध कीजिए।
महसूस कीजिए परम चैतन्य अपने आप अंदर आ रही है, इसको आने देंगे। Nectar is flowing automatically inward. Let us allow to flow inward wherever it want to go and fill. आकाश देवता कृपा कर हमारे माध्यम से बहने वाले परम चैतन्य को पूर्ण परिसर में और पूर्ण विश्व में फैलाने की कृपा कीजिए। हे आकाश देवता, प्लीज suck the vibrations flowing through us and spread it all over the area and all over the world. इधर भी हम निर्विचारिता में रहेंगे तो नेक्टर अपने आप अंदर आते जाएगा। If we will be in thoughtless, the nectar comes automatically inward. Whenever we get into thought, आज्ञा चक्र blocks and nectar stops. हमें विचार आने को शुरू होगा, फिर आज्ञा चक्र बंद होगा, फिर नेक्टर अपने आप अंदर नहीं आएगा। तो निर्विचारिता में रहने की कोशिश करेंगे। Let us make this habit to vibrate the clouds half an hour minimum in a day whenever we get the time. हम दिन में जब कभी भी हमको समय मिलेगा, दिन में कम से कम आधा घंटा हम क्लाउड वाइब्रेट करने की आदत डालेंगे, निर्विचारिता में करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू आकाश देवता, थैंक यू वेरी मच। दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करेंगे, धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू आकाश देवता, थैंक यू श्रीमाता जी, थैंक यू सूर्य देवता। श्रीमाता जी, आपने हमको इकट्ठा लाके हमसे सब क्लियरेंस सेशंस करवा के लिया और हमें चैतन्य दिया, धन्यवाद। थैंक यू श्रीमाता जी।
let us stop here. जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी to all. जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप बोल रहे थे लास्ट में हम थर्ड राउंड कर सकते हैं क्या पर्सनल में? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कीजिए कीजिए कीजिए। नहीं, मेरी छोटी जो लड़की है ना, सहयोग कर नहीं रही। पहले करती थी, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर हो गया तो पता नहीं रहे, कर नहीं रही अभी। उसके आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं इतना लिख के करने के, बेटी का नाम लिख के कर लीजिए। थैंक यू। जय श्री करना माता है जी। जय श्री माता जी, करना है। मगर बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। श्रीमती जी, जो कोई भी बच्चे अभी एग्जाम्स में जा रहे हैं, पब्लिक एग्जाम्स फेस कर रहे हैं, उन सबको आप मन की शक्ति दीजिए और उनको अच्छा तबीयत दीजिए, हेल्थ दीजिए, ताकि वो एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेंड कर सके। उनको ज्ञापक शक्ति भी दे दीजिए श्रीमती जी। थैंक यू श्रीमती जी। इसके लिए शुभित नहीं करने का रहता है, प्रार्थना करने का रहता है। हाँ, जय श्रीमती जी। दीदी मेरा एक प्रश्न था। हमारे बच्चे हैं ना कि वो कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग जाने की वजह से उनका सेंटर जाना छूट गया है। वो उस टाइम पे कोचिंग उनका संडे को भी रहता है, तो उसके लिए शुभित करना है कि प्रार्थना करना है श्री माता जी से उन लोगों के लिए? देखिए, उसमें आपको कोचिंग बदलना है आपको। कोचिंग सेंटर दूसरी जगह डालो जहाँ आप वो सेंटर अभी जा तो सके। अभी तो उनका मतलब 2 साल के लिए उन्होंने पैसे ले लिए ना, 2 साल का उन्होंने पैसे कंप्लीट ले लिए, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो संडे को वो जरूर क्लास रखेंगे, जरूर एग्जाम रखेंगे। हाँ और उनका हाँ, अभी तो सेंटर उनके पास टाइम भी संडे रहते हैं ना दीदी। आप थोड़ा विचार करो, वो दूसरा दिन हाँ कब रह सकता है? आपका बच्चों का स्कूल रहेगा ना, दूसरे दिन रखेगा तो नहीं बच्चों दीदी, को हर स्कूल रोज का वो अटेंडेंस कोचिंग का। होता है, उनका हर रोज हाँ, कोचिंग होता है। तो हमारे मन से वो रहता है कि हमारे बच्चे 90% के ऊपर मार्क लाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होना। इसके अनुसार वो पैसे भी लेते हैं और उसके अनुसार वो काम मेहनत भी कराते हैं। इसमें हम किसी का गलती नहीं ढूंढ सकते, है ना। और श्रीमती जी ने बहुत सारे जगहों में बच्चों को बताया है, तुम पूजा में नहीं आएगा, एग्जाम्स में है तो आप एग्जाम की तरफ, पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दो। पूजा में नहीं आएगा तो मेरा ब्लेसिंग तुमको रहेगा। अच्छा। मगर जानबूझ के बच्चे घर में ध्यान कर रहे हैं क्या, आप उनको फुटसोक करा रहे हैं क्या, वो श्री माता जी को हाथ जोड़ते हैं क्या, बंधन लेते हैं क्या, वो आप देखो। वो बच्चे श्री माता से जुड़े रहे और श्री माता जी की तरफ उनके भक्ति रहे, वो इम्पोर्टेंट है। श्री माता जी बच्चों को जानती है, बच्चों का एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो श्री माता जी को पता है ना। पद्मा दीदी, कैन आई शेयर समथिंग? थैंक यू दीदी। जय श्री माता दीदी। दीदी। पद्मा दीदी, क्योंकि आज बच्चों की बात निकली है, माय एल्डेस्ट सन, यू नो, लास्ट ईयर व्हेन ही वाज गोइंग फॉर हिज हायर स्टडीज, बाहर जा रहा था वो, फर्स्ट टाइम लाइक यहाँ से बाहर जा रहा था आफ्टर कोरोना। तो आई यूज्ड टू प्रे टू श्री माता जी, तो श्री माता जी के फोटो में से सिर्फ एक ही आंसर आता था, ही इज माय सन। So then he got a chance to go to France and there he topped. वही श्री माता जी हम बहुत सारे जगहों में बताए हैं, बच्चे एग्जाम के लिए रहे तो सेंटर में आ जाना, पूजा में आना जरूरत नहीं, आप एग्जाम की तरफ आपका ध्यान दो। आप लोगों को सभी बड़े बड़े हायर पोस्ट में श्री माता जी सर्जियों को चाहते हैं। तो हायर पोस्ट में बच्चे जाना है तो उनका एजुकेशन सही होना चाहिए, है ना। हाँ, ये छोटा वाला भी दीदी, छोटा वाला भी नहीं जा पाता है सेंटर, आ नहीं पाता है। कभी कभी मैं बोलती थी उसको कि सेंटर तो जरूरी है, चलो, बट ही डजंट गेट टाइम। बट घर में वो अच्छी तरह करता है। हाँ, वो घर में करने दो, उनको ध्यान करना है, फुटसुक करना है, बंधन लेना है, श्रीमती जी को प्यार से भक्ति से हाथ जोड़ना है, ये घर में कर रहे हैं ना। और जब उनका एग्जाम खत्म होगा आप उनको सेंटर लेके जाइएगा, है ना। हाँ जी दीदी ऐसा कुछ नहीं है दीदी। हमारा बच्चा तो घर पे सेल्फ स्टडी करके डिप्टी कलेक्टर बन गया, बस माँ के प्रति समर्पण था उसका। और एमपी में सेकंड पोजीशन आया, रहता है दीदी। हाँ, वो तो एमपी है। में सेकंड पोजीशन आया वो।
वो होशियार है इसीलिए। और सभी हम 5 उंगली एक जैसा नहीं रहता है ना दीदी। सब हंसी जो उड़ाते थे, हमारी बहुत हंसी उड़ाते थे सब, जो भी घर पे आता था तो माँ बेटे समझते थे अपनी बात, माँ है तो अपने को कोई चिंता नहीं है। हाँ ये सही चीज है, सही है। सभी का एक ही जैसा स्थिति नहीं रहता है, एक ही जैसा पढ़ाई का भी स्टेट नहीं रहता है, किसी हाँ किसी को ये बात है। एक्स्ट्रा जरूरत पड़ता है। अभी आप ध्यान माँ में भी देखिए, किसी किसी को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी किसी कुछ भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहता है। माँ हमको के कुछ भी माँ का समर्पण भी समर्पण, पूरा चाहिए। समर्पण तो सबसे समर्पण पहले पूरा था चाहिए। बच्चे का, समर्पण पूरा था अच्छा उसका। है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अब तो अपर कलेक्टर है दीदी, और बहुत जल्दी जल्दी हाँ प्रमोशन करके। कंग्रेचुलेशन, हाँ हाँ उनको अभी कंग्रेचुलेशंस बोलिए। 3 दिन ही हुए, पर माँ के प्रति बहुत समर्पित है, अकेला रहता है, माँ के बिना नहीं रहता, वो एक चीज है। और सेंटर नहीं वही जा वही पाता। श्रीमती जी वही, अभी वो कलेक्टर है तो सेंटर में जाना उनको भी मुश्किल होगा, हाँ क्योंकि वो उनका उतना पब्लिक ड्यूटी परेशान रहता है। करती है ना, पब्लिक हाँ परेशान पब्लिक करती है, परेशान करते इसलिए नहीं नहीं, उनको जाता। ड्यूटी भी दिन रात कभी भी फोन आया तो हाँ उनको जाना पड़ता है, 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है उन लोगों को। तो पर माँ बहुत सारे सहयोगी से है, हमारे उडुपी में डिप्टी कलेक्टर है, वो सहयोगी 3 साल से कर रहे, 30 साल से। वो पहले एयरफोर्स में थे, बाद में वो कर्नाटका एग्जाम, पब्लिक एग्जाम लिख के इधर आ गए, कर्नाटका में है। बहुत सारे लोग हैं, मगर उनके पास 24 घंटा इसमें है, जब कभी भी टाइम टाइम नहीं, मिलता है वो जुड़ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, सेंटर में आते हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स में आते हैं, प्रचार प्रसार में आते हैं, जब समय मिलता है। पर अपने यही हिसाब बड़े से बड़े करता पोस्ट है, में, अपने हाँ हिसाब से बड़े घर पे बड़े, माँ के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है, बस एक चीज है। हाँ माँ देखती है कि नहीं टाइम है, बच्चा था वही गया। सभी बच्चे बड़े बड़े पोस्ट में जाए, वही सभी बच्चे ऐसे बड़े पोस्ट में श्रीमती जी को चाहिए, इसलिए उनका पढ़ाई होना है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बच्चों के लिए सिर्फ प्रार्थना है, शुभिट नहीं करने का है। और हम अगर चिंता उसके नहीं अंदर करते थे, चिंता नहीं करना, माँ के ऊपर छोड़ दो, आपका बच्चा आप जाने। और क्या है, अगर बच्चे बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तब हमको शुभिट करना है, एग्जाम के लिए शुभिट नहीं करना है। वो तो है ना? माँ कराती है अपने आप। दीदी फॉर द छोटा बेटा भी मैंने 10th में उसके 80 एक्सपेक्ट किए थे, बट ही गॉट 96%। हाँ वेरी गुड। मैं इतना वही पीछे पढ़ती नहीं हूँ पढ़ाई के बारे में बिल्कुल, हेल्थ की फिर भी थोड़ी चिंता हो, बट पढ़ाई में तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं पड़ती। देखिए, और कुछ बच्चों को ज्यादा पढ़ाई 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 की जरूरत नहीं रहती है। हमारी पहला बेटा, दूसरी बेटी है, पहले हाँ वाले भी हाँ कल भी सुबह एग्जाम देना है, आज वो स्कूल से आएगा, फिर खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, 6 बजे 6:30 बजे आएगा और नहाएगा, खाना खा के 7:30 8 बजे तक सो जाएगा, फिर वो सुबह 4 बजे अपने आप उठेगा, कोई उसको नहीं उठाएंगे, नहीं हाँ अपने कोई आप हाँ उठेगा, पढ़ाई करेगा, वो करेगा। वो सेकंड रैंक इन द वर्ल्ड है फील्ड में, वाह। अभी इंजीनियर है। और बेटी भी वैसे, बेटी भी वैसे, वो आयुर्वेदा डॉक्टर है। कल सुबह भी उसको एग्जाम लिखने को जाना है, वो रात को 12 बजे 1 बजे तक सिनेमा देखेगी, फिर एग्जाम लिखेगी। और अगर मैंने एक दिन इतना गुस्सा है तो टीवी बंद करके रखा, तो कल रोज रोज यही हालत है तुम्हारा, क्या सिनेमा देखेगी, एग्जाम लिखेगी। बोलते तुमको मेरा मार्क आता है ना, फिर तुमको क्या चिंता। मैं बोली ये आदत ठीक नहीं है, तो मैंने बंद कर दिया टीवी। तो सुबह देखती हूँ उसका आंख रो रो के इतना बड़ा बड़ा हो गया था, टीवी मैंने जी बंद किया करके रोई थी, सो रात सब रोई थी वो। इसलिए ओके। किसी बच्चों को पढ़ाई की उतना करने की आदत नहीं रहता, एक बार पढ़े वो निकल बैठ जाता है। हाँ हाँ एक ही हाँ बच्चे एक जैसा नहीं रहते हैं, तो जी किसी को ट्यूशन क्लास चाहिए रहता है, किसी को नहीं चाहिए रहता है, तो छोड़ हाँ देंगे, मगर उनको हम प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, स्ट्रेस उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालेंगे हम, बस उतना ही। हाँ जी हाँ, बस उसको माँ पर छोड़ दो, माँ का बच्चा है, माँ देखेगी। हाँ वही। ओके, जय श्री माता जी, जय श्री जय ओके श्री माता। माता दीदी, जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम रुकेंगे, बाय, जय श्री निर्मल माता। डे, जय श्री माता जी।